Good evening, everyone. How are you? Today we are starting our second lecture, lecture 2. Okay? We are starting our lecture 2. As I told you yesterday, that we have to, okay? Apart from continuing to think in English, there are some tips and rules we have to keep in mind to improve our thought process also. How do we go about with that? I will be telling the basic simple thing I tell you is whenever we meet someone for the first time. I have written here that I will be using some simple present tense today. Okay. Whenever we meet somebody for the first time, after the general greetings, after saying hi, hello, how are you, how's everything, we get to know each other. We want to know each other, and for that also becomes, I'm sorry, that also becomes a major problem, that what we have to talk to each other and how we have to talk to each other. First thing, as I told you, we have to understand what to speak and next is how to speak. Always keep these two sentences in mind, what to speak and how to speak. When we talk about what to speak, okay, whenever we talk about what to speak, we always use the right grammar, to make correct sentences. To make correct sentences, we need correct grammar. Correct usage of grammar we need. That is what to speak. Okay? We need correct grammar. We need correct vocabulary. Okay? How to speak? We have to keep in mind our tone. What should be our tone? What should be our expression? And what should be our body language? You know, body language always goes along with your speech. So, the basic thing I want to tell you is that you cannot speak a sentence without the right knowledge of grammar. And simplest way of getting to know each other, simplest way of telling about someone, simplest way of telling about some place, discussing some character, telling some procedure, the grammar that we use is simple present tense. You have studied simple present tense in your classes because you know that there are 3 types of tenses. Let us look into the grammar for a minute. There are 3 types of tenses we know. काल 3 तरह के होते हैं. You know that very well. Past tense and future tense. Right? Okay. Now, if we talk of present tense is further divided into 4. It is further divided into 4 parts. That is simple present tense, present perfect, present continuous, and present perfect continuous.
Is that clear? Now, this is the most important tense. Simple present tense is the most important tense that we have to study. And it is very helpful in present tense that we can make in our speech. Okay? The best use of simple present tense that we can make in our speech. First, सीधा सा description. Whenever we have to talk about description, what is the meaning of the word description? Meaning of the word description is to describe. Okay? Description means to describe. You can describe we talk about description. Whenever we have to describe a person, we use simple present tense. Though there is a a conventional definition of simple present tense is a tense when we are talking about an action that was going on in the past is continued in the present, and for how long it will continue in the future we do not know about it. Then we use simple present tense. This is a basic grammar definition that we know of. But how are we going to apply this grammar in our day-to-day life? How are we going to apply this grammar in English conversation? How are we going to apply this simple present tense in our speech? That is what we have to understand. So, whenever we have to describe a person, whenever we have to describe a place, okay, whenever we have to describe a method of doing something, okay, whenever we have to describe a thing, whenever we have to describe an application of some new technique, whenever we have to talk about a procedure of any kind, okay, we only use simple present tense. We do not use anything else. We only use simple present tense. Why do we use simple present tense? I'll give you a small example. Suppose somebody is asking me about my habits. Somebody is asking me about my habits. What is my habit? I go for walks in the morning. It is my habit and it is my routine also. I eat healthy food. So what am I saying? I eat healthy food. Okay? My father eats healthy food. My father eats healthy food. Clear? So, this is a habit. I have a habit of eating healthy food. My father has a habit of eating healthy food. So, whenever we are talking about some habit, it means habitual action. We are talking about habitual action. Any action that is our habit means it was going on in the past, it is going on in the present, and how long it will go on in the future is simple present tense. Then anything that is your routine. Anything that is your routine. Like I brush my teeth in the morning. I go for walks in the morning daily. So you're going, brushing is an action which you were doing in the past also, could be near past, could be far off past, okay, could be right from 10 years back, 20 years back, maybe just say 10 weeks back, okay, but there is some action. There is some action. One sec. There is some action you started in the past. कोई एक्शन आपने पास्ट में स्टार्ट करी. ओके
उसको आपने कंटिन्यू किया प्रेजेंट में। आगे फ्यूचर में कब तक आप करेंगे इज नॉट डिफाइंड, ओके। विल गो ऑन in future means this is an action, maybe brushing your teeth, maybe going for a walk, okay, maybe eating healthy food, okay. This action which you are talking of is covering all the three times. That is, it's talking about past also, it is talking about present also, and it has involved your future time also. It is reflecting all three times. So when it reflects all three times, then you just can't talk about past. You just can't talk about present. You just can't talk about future. That will reflect something else. Like, I brush my teeth daily. Fine. If I say, I brushed my teeth, or I am brushing my teeth, okay, or I will brush my teeth. So we have here brushed. It is showing only one time, that is past. It is only showing one time, that is past. I am brushing is showing the existing time, now. It does not involve past. It only involves the existing time, okay? It involves the existing time. It is not talking about the past, nor it is talking about future, okay? Now let us come to the third sentence, will brush. Will brush is talking only of future. It is not talking about the past. It is not talking about your present. So what does it show? I brushed my teeth means मैं पहले ब्रश करता था पर अब मैं ब्रश नहीं कर रहा. I am brushing my teeth, मैं अभी ब्रश कर रही हूँ, मैं पहले भी नहीं करती थी, आगे भी नहीं करूँगी. I will brush my teeth, ना मैं पहले ब्रश करता था, ना मैं आज ब्रश करूँगा, मैं तो कल से ब्रश करूँगा. Okay, so इसको हम ये habit नहीं है. Then it will not reflect your habit. This will not reflect your routine. It is some adopted habit or adopted action that you have picked up for a short period of time. So it is not fulfilling the purpose. That is why when we talk about habit or routine, this is wrong. It is only I brush my teeth. From the word brush, we are not able to define any time. We cannot make out any time. No time is specified by this word brush. That is why it is called infinity also. What is it called? Infinity. Infinity means when it has got no time, it is including, it means all the time. And all the time means past, present and future. This is clear to you? Very clearly I am telling you because we have just done the definitions and we have not tried understanding what exactly is simple present tense. So कोई भी चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाता है, एक चीज़ अगर आपसे पूछी जाती है कि आप प्लीज़ बताइए आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है, सो आप वही रूटीन बताएंगे. अब हम आ रहे हैं कॉन्वर्सेशन के ऊपर. प्रॉब्लम आती है कॉन्वर्सेशन के ऊपर. सो हमसे जब पूछा जाता है प्लीज़ आप बताइए व्हाट डू यू डू द होल डे, व्हाट इज़ योर रूटीन,
जो होल डे आज आप कर रहे हो वही आप कल भी कर रहे थे और वही आप कल भी करोगे। तीनों टाइम को आप क्लब करके ही बताओगे ना, मेरा रूटीन ये होता है, मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठ के फिर मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से मैं 6 बजे वापस आके फिर मैं अपने जॉगिंग या क्लब या जिम जाता हूँ, फिर डिनर करके मैं 10 बजे सो जाता हूँ। ये आपका रूटीन है। इसके बीच में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं जो डेली नहीं होती हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आती हैं, वो रूटीन के अंदर नहीं आती हैं, वो आपका एक शॉर्ट पीरियड एक्टिविटी कहलाती है। जो भी कोई शॉर्ट पीरियड एक्टिविटी कहलाती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नहीं आती है। सो ये चीज़ आप जो कर रहे हो, जो रूटीन आप मुझे आज बताएंगे, आप किसी इंटरव्यू में गए हो, कहीं गए हो, आपसे पूरा डेली रूटीन पूछा जाता है, तो आप वही रूटीन बताते हो जो आप आम तौर से कुछ समय पहले से करते आ रहे हैं, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं और आगे भी आपका फॉलो करने का इरादा है। और कब तक है इरादा, ये आप अभी खुद नहीं बता सकते ये चीज़। इस तीनों टाइम को अमैलगमेट करने में, तीनों टाइम को इंटीग्रेट करके जब आप कोई एक्सप्रेशन देते हो, उस वक़्त हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो आपके जो 3 टाइम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, ओके, एनी एक्शन जो आपके 3 टाइम्स को रिफ्लेक्ट करती है, तीनों टाइम्स का अमैलगमेशन है, तीनों टाइम्स को अमैलगमेट करती है, तीनों टाइम्स को आपस में इंटीग्रेट करती है और एक रूटीन बताती है, चाहे वो रूटीन हो या हैबिट बताती है। उस एक्शन को जब हमने बोलना है तो उस एक्शन को बोलने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, वो मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगी, थोड़ा सा पॉज लेके बताऊंगी। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये तो आपका रूटीन का मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको हैबिट का समझा दिया, ठीक है। कोई प्रोसीजर आपसे पूछा जाता है या कोई प्रोसेस आपसे पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है बैंक में अकाउंट खोलने का क्या प्रोसीजर है, या आपसे ये पूछा जाता है 10th का फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। या आपसे रेसिपी पूछी जाती है, चाय कैसे बनाई जाती है, हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू मेक एन ऑमलेट, हाउ टू मेक मैगी नूडल्स। ओके, सो जब आपसे कोई प्रोसेस पूछा जाता है तो आप ये देखा है, जैसे चाय आप 4 दिन पहले बना रहे थे, आज भी वैसे ही बनाओगे और कल भी वैसे ही बनाओगे, वो प्रोसेस सेम होता है, बदलता नहीं है। सो जब आप किसी, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, ये भी किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम आ जाते हैं, जब हमने किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, किसी प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना है, किसी मेथड को डिस्क्राइब करना है, किसी रेसिपी को डिस्क्राइब करना है, सो ये चीज़ तो हमेशा तीनों टाइम पे सेम ही रहती है ना, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द 3 टाइम्स, यस एंड नो, तीनों टाइम्स को रिफ्लेक्ट करता है ये। तो ऐसे में भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करना है और कुछ भी हमने नहीं यूज़ करना। और आप देखिए, यू विल बी 100% करेक्ट इन योर रिटन एंड spoken English. You will be 100% correct. You are not going to make any mistake. Okay? So this is what I am trying to tell you. Yeah, process. What is the process of taking admission in a college? पूरा प्रोसेस है, आप पहले फॉर्म फिल करिए, फिर आप अपना रिटन टेस्ट दीजिए, ये आप अपना फीस पे करिए, आप अपने स्टडी मटेरियल खरीदिए, यूनिफॉर्म खरीदिए एंड यू सीक एन एडमिशन। फिर आपसे प्रोसीजर पूछा जाता है, बैंक अकाउंट खोलने का क्या प्रोसीजर है,
मेथड पूछा जाता है कि आपने कोई व्हाट इज द मेथड ऑफ यू कैन से ओपनिंग ऑफ कंपनी, पूरा मेथड बताया जाता है, या आपसे कुछ और मेथड्स पूछे जाते हैं, लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, वो उन सब के अंदर हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है जब आपसे रेसिपी पूछी जाती है कि आपका डिनर बहुत अच्छा था, दैट डिश वॉज वेरी नाइस, दैट पुडिंग वॉज वेरी नाइस, दैट डेजर्ट वॉज वेरी नाइस, हाउ डिड यू मेक इट, प्लीज टेल मी द रेसिपी। सो जब आप ये चीज़ें बताते हो उसमें आपका तीनों टाइम को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, सो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। और आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जब उसके हम यूजेज पे आ जाते हैं तो सबसे सिंपल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज। हमने बस ध्यान रखना है कि मेरे से एक ऐसी चीज़ पूछी जा रही है जो प्रेजेंट में भी हो रही थी, पास्ट में भी हो रही थी और फ्यूचर में भी होती रहेगी, तो मुझे बात करते वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करना है, किसी और चीज़ को नहीं यूज़ करना। जब आप इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो आप भले बहुत साधारण इंग्लिश बोलेंगे, बहुत सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, पर 100% करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं विल लगाऊं, वॉज लगाऊं, हैज़ लगाऊं, हैव लगाऊं, हैड लगाऊं, क्या लगाना चाहिए, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर वर्क करते चलना है, you are going to be absolutely right all the time. Is it clear? सिंपल प्रेजेंट टेंस के ग्रामर के हिसाब से और भी बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं जब हमको किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। हमारा नेक्स्ट आ जाता है जब हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है। ओके, किसी को गाइडलाइंस देनी है, किसी को इंफॉर्मेशन देनी है किसी तरह की, इन सब के अंदर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शंस, ओपन योर बुक्स, स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर बुक्स, गो आउट ऑफ द रूम, सिट क्वाइटली, डू योर वर्क नीटली, sign every page of your answer sheet. These are the instructions. आज आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपके हर एग्जामिनेशन आंसर बुकलेट के ऊपर भी आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं। वहाँ पे टेंस देखिए कौन सा लिखा हुआ है, वहाँ पे टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू, ये जो मैंने आपको बोला था रूटीन और हैबिट, ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। ऑल दिस इज योर रिटन इंग्लिश। रेसिपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. So whenever we talk about written and spoken English, basically we talk first when we get to know each other. We are meeting somebody for the first time and we want to know more about that person. We want to know about the habits, the lifestyle, the routine of that person. We are more interested to know that thing. Okay, so for that I will show you a small clipping where two people are meeting. They have met in a park. They are talking to each other and the boy wants to know the routine of the lady he is talking to. Okay, and let us have a look at it. First of all, this is simple thing that I have already told you. We use simple present tense to describe. As I told you, we use simple present tense to describe what? Simple common actions, regular actions, which we call habit or routine. Regular actions include habit and your routine. Fine? Then facts and known truth. Anything which is a fact. The earth revolves around the sun. Death is inevitable. Okay? Known facts. We do not change those facts. We always use, like as I tell you, that
The sun rises in the east. It is a fact. Similar to it, the sun sets in the east. The earth revolves round the sun. The earth revolves round the sun. These are the facts. These are the known truth. You cannot change it. Okay? Then when we talk about habits and hobbies, they are basically same. Transport timetables, they come under instructions. We always use simple present tense. Instructions and recipes, as I've already discussed with you. Okay? So whenever we have to talk on these things, we have to keep only one thing in mind, simple present tense, nothing else. We have to keep only simple present tense. बहुत strongly मैं आपको बोल रही हूँ, simple present tense की भी use करना शुरू कर दो. Simple present tense को की आदत डाल लो, आपका 60 to 70% आप बहुत comfortably English बोलना शुरू कर देंगे. Is that clear? Okay. Now I have to see some of the statements that have come. Okay. We have coming, good evening has been coming from many students. Somebody is saying your explanation is very good. Whosoever has written this, you explain is very good. You should write your explanation is very good. Okay. Please tell about your course. I did speak about my course yesterday. You can look up into the video that we have recorded for yesterday. Okay. And let us continue. Now here, the next thing, simple present tense is a verb tense with two main uses. The use of simple present tense when an action is happening, H is gone from here, right now, or when it happens regularly, or unceasingly, non-stop, ongoing process, okay? It is non-stop. Anyway, doesn't matter. Sir, can I have that slide again? It's gone somewhere. The past slides. Okay, thank you. So, unceasingly. Unceasingly is non-stop. Anything that does not stop, okay? Non-stop. A continuous thing. Anything that happens in continuity, which is why it is sometimes called indefinite. Indefinite, as I told you, there is no definite time. Indefinite means no fixed time. It is not showing any one time out of those 3 times, rather it is showing all the 3 times. Okay? All the 3 times. So let us go through quickly. No. Is seeing? No. Okay? Will see? Do we have will see here? No. We have only the first form. We have only V1. We have only the first form here. Let us move further. I am good. Now she is saying, I am good. Am. Okay? She is not saying was.
Okay? Will, no. She's only using V1, first form. Okay? This V1 is called base form. This V1 is called the root word. This V1 is called infinity. Is that clear? Here next. I am also fine. I want to know you better. Okay? So here we are always using V1, V1, V1. Everywhere means I want to know means I wanted to know. Still you want to know. In the past also you were interested to know. In the present also you are interested to know. And this interest will continue in the future also. Okay? Next is, now she is telling her routine. This whole thing is routine of this lady. What she does the whole day. Okay, with slight changes here and there, few additions and subtractions, but on the whole, this is her routine of the entire day. I get up. She's using the word get up. There is V1, V2, V3. Okay, V1 is get, V2 is got or gotten. Or got, both. She's using only V1. I get up at 7 in the morning. Next, I have breakfast. She's again using V1. Fine? V1, I repeat here, V2, V3. Okay? Have, had, and has and have both. Fine? Now here next, sorry, I leave my home at 8:30. I drive. Every day she's driving. Every day she leaves at 8:30. Yesterday also she left at 8:30. Day before yesterday also she left at 8:30. Means in the past also it was 8:30. Today also it is 8:30. Tomorrow also, present. Tomorrow also it is going to be 8:30. Means this going to the office at 8:30 is reflecting all the 3 times. So we will use V1. V1 is leave, V2 is left, and V3 is also left with an auxiliary of has or had. Okay? Drive. Every day she is driving. Okay? I am driving to work. I drive to work. Simple. Okay? So here it is. In the past also, she was driving. Anyway, let us not waste time. In the past also she was driving. In the present also she is driving. And in the future also she will drive to the office. So it is showing all your 3 actions, 3 times. So it is drive, V1. So what do we use? V1, V2 and V3. Drive, drove, driven. We don't have to use these 2. We have to use only V1. I am repeating V1, all the time V1. Use V1.
and you will say we won. We won in speaking English. हम जीत गए. Is that clear? Now next slide. My work starts at 9 a.m. Again starts. Okay? So starts is again V1. V2 is started and V3 is also started. We write ED and with V3 also we write ED. I like my work. What does it mean? In the past also she enjoyed working, in the present also, and in the future also she is happy with her work. So this is again talking of all the 3 times. Is that clear? Next, I leave my office at 6 p.m. I did leave again. I leave for my work at 8:30. I leave from my house at 6 p.m. Okay, I come home. So leave is leave, left, left. V1, V2, V3. Only V1. Come, came, come. V1, come. Okay. Now you can say, ma'am, V1 is come, V2 is came, and V3 is again come. So why we call this come as V1 and we are not calling this as V1? Because this never goes alone. Small thing I'm telling you. This will go alone. This has to have some auxiliary verb. Some auxiliary verb. एक helping verb इसके लिए होता है बहुत ज़रूरी. Third form. Third form कभी भी come अकेले नहीं जाएगा. इसके साथ आ जाएगा had come, has come. So whenever we talk about V3, V3 is actually 2 words, not just 1 word. Okay? And this is single. It does not have any helping verb. Whenever we talk of V1, V1 अपने आप में 1-man army है. Okay? V1 is a 1-man army. It is a 1-man army. इसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, इसको कोई ऑक्सिलरी नहीं चाहिए, इसको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? सो V1 के साथ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. नो सपोर्ट. It is independent in itself. Okay? No support at all. No auxiliary verb. Okay, in itself, it's complete. So, that is the difference. V1 के कम के अंदर और V3 के कम के अंदर क्या फ़र्क है? V1 का वो अकेला है. इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, तब जाके वो V3 कहलाता है. Is that clear? इसीलिए दोनों काम में फर्क है. They are not same. Is that clear? Next is I cook dinner myself. Cook. Again, V1. Clear? I eat. What is the first form of eat? Eat. Second form, ate. Third form, eaten. Okay? So, eat, ate, eaten. We don't have to talk of this. We have to talk of only eat. Fine? Then next she is telling, after dinner I watch English stories. Now I want to tell you, you see a movie or you watch a movie? थोड़ा सा difference है ये. What is the difference between to see and to watch? We never see a movie. You never see a movie. This is wrong. You always watch a movie. Why? Anything that is telecasted. Okay, anything that is a telecast. Always we use watch. It is a kind of a replay. It is not coming, you are not seeing it with your naked eyes. You are not seeing it directly in flesh and blood before you. You are watching it through some kind of a broadcast. Is that clear? So then we never see a movie. We always watch a movie. That was an additional thing I wanted to tell you.
So here it is watch, watched, and helping verb plus watched. So we have to talk. Love thriller stories. You're telling I love thriller movies, I love action movies, I love classics. You can tell anything about your choice of movies, okay? So love, loved, loved. We only talk of V1, that is love. I go to bed at 10 p.m. I'm sorry, it's gone from here. I'll write here. I go to bed. Go. Okay? V1, V2, and V3. Go, went, gone. This is showing tense. This is showing past perfect. We have to talk of all the 3 times. Yesterday also, it was 10 p.m. Today also, it is 10 p.m. Tomorrow also, as per my routine or habit, it is going to be 10 p.m. Fine? So this is the routine she has told her friend. And then he said, wow, you have a busy schedule. You have a busy schedule. Means you are very busy. Fine? Have. Again is V1. Is that clear? So what did I tell you? I told you that whenever we have to talk about a routine, we just have to use whenever we have to talk of a routine, we have to talk about a habit, we have to use simple present tense. Another interesting thing I want to tell you about simple present tense, one thing I'll tell you, how to use simple present tense. एक सिंपल सा फॉर्मूला आप देखिए, आप उसी के ऊपर चलेंगे. English grammar is just like mathematics. Go on the formula, you will never be wrong. You will take a noun. With noun, you are going to use V1. Is that clear? After V1, you are going to use an object. Fine? Now, the thing is, this noun will be either plural or this noun is going to be singular. ये noun या तो plural होगा या singular होगा. एक boys, एक से ज़्यादा. Boys, boy. उसमें हमने V1 कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताना है. ओके? Boys plus V1, boy plus V1. एक सेंटेंस लिखती हूँ. Boys dance. Boy dance. Don't take it as a correct thing. I'm just trying to explain you something. This, as I told you, is noun. This, as I told you, is V1. Again, this is again noun and this is again V1. Fine? पर कुछ सुन के अच्छा नहीं लग रहा. कई बार हम मुंह पे कोई चीज़ बोलते हैं तो हमें फील अच्छी नहीं आती है. Boys dance तो सही लग रहा है, पर boy dance, दोनों में एक लड़का है तो भी डांस, 2 लड़के हैं तो भी डांस. फिर हमारे बहुवचन का और एक वचन का क्या हुआ? What about singular and plural? If the noun is singular, the verb has to be singular to make a singular sentence. If the noun is plural, the verb also has to be plural to make a plural sentence. Correct? Now the thing is, यहाँ पे थोड़ा सा this sentence is wrong. सिंपल सी बात है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तब हमारे पास एक ही एस होता है, 2 एस नहीं है हमारे पास वर्ब के ऊपर लगाने के लिए. थोड़ी रैशनिंग हो गई है. ओके, एस की कमी पड़ गई है. ओके, हमारे पास एक ही एस है. एज आई टोल्ड यू, जब हमारे पास 2 रूल्स फॉलो करते हैं हम, एन एस प्लस वी और एन प्लस वी एस, बस ये यूज़ करो. ये दोनों आपके
सिंपल प्रेजेंट टेंस के 100% करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका, आपने और कुछ भी नहीं यूज करना। ओके, लाइक NS का मतलब क्या हो गया है? मोर देन वन नाउन। ओके, मोर देन वन नाउन मीन्स एक बॉय नहीं, उस बॉय के साथ एस लग गया तो ये हो गया बॉयज। ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस नहीं आएगा, क्योंकि एस हम एक ही जगह लगा सकते हैं। ये सिंपल सा रूल आप समझ लो। अगर आप कभी बोलते वक्त भूल भी जाओ कि कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे एस नहीं आएगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर मैंने एस का यूजेज नाउन में कर दिया है तो वर्ब के ऊपर नहीं करना, और अगर मैंने एस का यूजेज नाउन में नहीं करना है तो वर्ब को देना है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। यू हैव टू कीप बोथ द थिंग्स इन माइंड। पहली बात, हमारे पास दो एस नहीं है, देयर इज ओनली वन। Just keep that in mind. And that has to be used. छोड़ नहीं सकते। कम है पर यूज करना है, एक है पर यूज करना है। सेकेंड थिंग, बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो भी अलाउड नहीं है। फाइन। सो हियर एंड मीन्स मोर देन वन नाउन, उसके साथ हमारे पास क्या लगेगा? वर्ब V1 विद एस और विदाउट एस। यहाँ पे एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, एस लग गया ना, ठीक है। V1 में डांस करोगे, डांसेस नहीं करोगे। अब हमारा आता है एन, ओनली एन, ओनली एन। ओनली एन मीन्स नाउन विच इज ओनली one, okay, or subject which is only one, एक वचन, singular। ठीक है, ये अकेला है तो इसमें हम लिखेंगे n। फॉर एग्जाम्पल बॉय, इसके साथ V में S जाएगा। बॉय डांसेस। अब आपको समझ आ गया? एस का गेम है ये पे, दिस इज ओनली द गेम ऑफ एस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? इट इज गेम ऑफ एस। सिंपल, एक ही एस है, नाउन में डाल दिया तो वर्ब में नहीं डालेंगे, वर्ब में डाल दिया तो नाउन पे से हटा देंगे। ऐसे अगर कर लिया तो सेंटेंस 100% करेक्ट जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये एन प्लस वी एस और एन एस प्लस वी के बीच में इस जगह पे कोई भी कबाब की हड्डी नहीं बनेगा। दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। मीन्स, और ये कबाब की हड्डी कौन है? कबाब में हड्डी, आई एम सॉरी, ओके, नो हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। ये दोनों के बीच में देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब। नो कबाब में हड्डी, नथिंग विल बी देयर। नो कबाब में हड्डी इज गोइंग टू बी देयर हियर, दिस विल नॉट बी देयर। फाइन ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, वॉज, विल, कैन, हैज, हैव, आर, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नहीं आएंगे। जस्ट कीप इन माइंड। ओके, सो हियर अगर हमने आपको फॉर्मूला दिया था, जो मैंने आपको नेक्स्ट फॉर्मूला दिया था, जो मैंने आपको बोला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हम किसी की रूटीन की बात कर रहे हैं, किसी की हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या दिया था? नाउन अगर एक है तो उसके साथ वर्ब जाएगा और साथ में ऑब्जेक्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स नाउन जिसके ऊपर एक्शन करता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, लाइक राम ईट्स एन apple. Ram is noun, one,
वर्ब हो गया है ईट, ओके, इसके साथ हमने एस लगा दिया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है. इज दैट क्लियर? बॉयज ईट एप्पल. एप्पल्स एक से पूछा जाता है, प्लीज टेल मी अबाउट योर रूटीन. आप इजीली बोलोगे मैम आई गेट अप एट 6 इन द, गेट बोलना है, ठीक है, और आई लगाना है अपने लिए. फाइन. अगर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहे हो, आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है. जब आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हो आई और वी, इसके साथ आपका वी के साथ एस नहीं लगता, पर जब आप इसमें करते हो तो अगर सिंगुलर होता है ही, शी, दे, देम और यू, then we use accordingly. Fine. Now let us have a look at this thing. Simple present tense. इसका structure क्या है? Formula. Subject, verb first form and object. पर इस subject को मैंने आगे further segregate कर दिया था. किस तरीके से? Game of S समझा के आपको. I did game of S. Okay, that is N S plus V 1 plus object or N plus V1S plus object. This is what I told you. Okay. When you are talking about first person pronoun, then you use like. When you are using first person pronoun, then you use like. Okay. When you use second person pronoun, then you use, okay, this is second person pronoun in singular, then we are using this S here, V, S. Is it clear to you? You are able to understand? Next. Next. Okay. Simple present tense. एक सिंपल सा रूल है, जब हम I के साथ do आता है, V के साथ do आता है, U के साथ do आता है, they के साथ do आता है. Okay, do is V1, that is plural form. As I told you, first person pronoun in plural and singular में हम plural ही लगाते हैं. You दोनों को reflect करता है. Plural में भी हम you बोलते हैं, singular में भी you बोलते हैं. तो हम they अपने आप में plural है. He is N, not NS. She is also reflection of N, that is pronoun in singular form and pronoun in plural form. It is also a pronoun in singular form. So इसके आ जाएगा, सब तरफ आपका VS आएगा. Is it clear? I hope I've made myself clear. A very simple thing. Home, you can only do a practice at home. What practice you are going to do? If you do it, I'll be very, very happy. Okay, so your first practice sheet that you have to keep in mind is using simple present tense. Okay, using simple present tense, you can describe your mother. You can describe yourself. You can describe the place you visited. Okay? You can describe the features of the new phone that your father gifted you. Okay? वो features same ही तो रहेंगे. Features of the new phone that your father gifted you. Try to do this and try to speak. Make small sentences. Okay? I am using a simple present tense because the feeling that I am going to tell you now was there in the past also, present also, and will continue in the future also. That is, I love you all. Bye. Have a nice day.